Back-to-back losses England के लिए. The team that everybody had in the top four is potentially going to be knocked out of the World Cup. बैड सीन्स फॉर जॉस बटलर एंड कंपनी यार काफी ही हद तक गिर चुकी है इंग्लैंड की टीम. इट डजंट लुक लाइक द इंग्लैंड टीम वी वर सीइंग इन द टेस्ट सर्किट. प्रिडोमिनेंटली जो हम लोगों को दिख रहा था कि भाई ये टीम शायद ये वर्ल्ड कप में विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इंग्लैंड हैज बीन बिलो पार. मतलब यार समझ के बाहर है कि यही वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को एशेज में टक्कर दी, यही वही टीम है जो 2019 में ड्रामेटिक फाइनल करे, यही वही टीम है जो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी, जॉर्ज बटलर जैसे खिलाड़ी, जो रूट जैसे खिलाड़ी, और आज जो प्रदर्शन था इट वाज वेरी वेरी सैड टू सी इंग्लैंड परफॉर्म लाइक दिस. एंड श्रीलंका ऑन द अदर हैंड, उनका एंजेलो मैथ्यूज जो निकल के आ गया, फिनोमिनल कमबैक यार. एज 36 या 37 का बॉय आके 5 overs कुछ डाला. I think he bowled like what 5 overs 14 runs and 2 wickets. He smashed it completely. Sri Lanka are coming up थोड़ा बहुत 2 matches back to back जीते बाद से they are in a confident spot. Their next few matches are against I think England. एक मैच है उनको जो खेलना, सॉरी इंग्लैंड का इंडिया का मैच भी है अभी उनको खेलने के लिए. इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि कहीं ना कहीं से अगर श्रीलंका अंदर घुस गई सेमीफाइनल के टॉप 4 फ्रंट में, अभी भी काफी फार फेच्ड है. ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट है, श्रीलंका के 4 पॉइंट है, लेकिन जिस तरीके से आज खेले, जो मैच्योरिटी से के साथ डाली आज श्रीलंका, आई थिंक हैट्स ऑफ टू श्रीलंका. दे कंप्लीटली स्मैश्ड इट. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंग्लैंड? I'll be waiting for Mustafa bhai to answer this for us because he is following England the most. I think he was having England in the bag. Ben Stokes जो बोलते हैं ना क्लच प्लेयर, आज क्लच प्लेयर भी नहीं कर सका कुछ. बट देखो भाई, आई थिंक you have to blame George Butler a lot for this. I think team selection, I don't know, could it be better? Did they have a few more players that they could have utilized? Do you think like Livingstone is not a proper spinner? A lot of questions with England के भाई what is exactly going wrong हमें समझ में नहीं आ रहा. ये इंग्लैंड स्क्वाड के साथ ये परफॉर्मेंस तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. नोबडी एक्सपेक्टेड. लाइक पोटेंशियली ऑलमोस्ट आई थिंक 4% कुछ है उनके पास क्वालिफिकेशन के लिए. एंड इट्स गोना बी समथिंग दैट वील हैव टू सी. they'll have to beat India, they'll have to beat New Zealand, they'll have to beat Pakistan, and I think they'll have not New Zealand, sorry, India Pakistan. और 2 मैच आई थिंक उनके किसके साथ, नेदरलैंड्स के साथ शायद एक मैच है और एक किसी के साथ है. सो आई थिंक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ नॉकआउट. बट अगर दूसरे परफॉर्मेंसेस फेल हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर फेल हुई, पाकिस्तान जैसे नॉकआउट हो गई, बिकॉज साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया अगर कुछ भी करो, दे स्टिल हैव गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स अंडर द बेल्ट. बट इंग्लैंड right now have been not the best performances as well. And अब देखो 156 एक मैच में, उसके बाद उनका जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट था 170 ऑल आउट. उसके बाद आप देख लो दूसरा उनका अफगानिस्तान के अगेंस्ट 215 में ऑल आउट हो गए. एंड अगेन उसके पहले मैच न्यूजीलैंड में 282 मार के हार गए. तो इंग्लैंड की बॉलिंग काफी वीक थी कि मेरे को नेवर नो स्टार पावर, ऑल वीक बॉलिंग फ्रॉम इंग्लैंड, weak batting. Everybody just coming and trying to hit. Bairstow 30 of 31, that's unheard of. जो जॉनी बेयरस्टो का गेम है, यूजुअली 30 of some 10 balls रहते हैं. जो रूट जिस तरीके से रन आउट हो गए, जो रूट इंडिया में काफी बोलते कि ही इज अ फैंटास्टिक बैटर ऑफ स्पिन, ही इज अ फैंटास्टिक बैटर ऑन इंडियन पिचेस. यू डिड नॉट. एंड देन जॉर्ज द बॉस इज फेलिंग. बिग लॉसेस फॉर द बॉसेस. एंड जॉर्ज बटलर इज स्ट्रगलिंग इन India, struggling to get off the marks, struggling to get a decent score under his belt. IPL में तो इतनी आसानी से मारते ये लोग, समझ के बाहर है. जैसे जॉर्ज बटलर हो गए, बेयरस्टो हो गया, अपन सनराइजर्स में देखे बेयरस्टो को, अपन जॉर्ज बटलर को राजस्थान में देखते. आदिल रशीद, दे आर नॉट एबल टू हिट द लाइन. मोइन अली अगेन जिस पिचेस पे उनको खिलाना चाह रहा था, वो पिच पे नहीं खिला के आप आज ये पिच पे खिलाए, बिकॉज ऑब्वियसली आपको तो जरूरत ही कोई चेंजेस करने के लिए. फिर बेन स्टोक्स इंजरी से आप ले लेके आए उसको, वो बड़ा सवाल होता है कि वाज दैट द राइट मूव टू टेक बेन स्टोक्स इन द स्क्वाड हु इज कमिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक नी इंजरी, ना बॉलिंग करने के लायक हो रहे हैं, फील्डिंग में होते हैं, ही इज बीइंग हेल्पफुल. Was that a big call from the English management? There has been a statement, I think it should be ECB वाले निकाले कि भाई we are behind this England squad, and वो तो बताना ही पड़ता आपको. But I'm pretty sure a lot of people right now, including us, we are probably going to be ripping into England and saying कि भाई this is not that attitude, that क्या बोलते हैं, that English aggressive arrogance, जो भी बोला आप, nature that we are usually seeing England do, they did not perform. Baz ball तो छोड़ते, चलो Baz नहीं है, but it's just a very sad वे. हाय सुदीप दादा. सुदीप दादा आपके नाम में भी यूके है, स्ट्रॉन्ग सुदीप दादा यूके, एंड आज यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम क्या कर गई भाई. इट वाज वेरी 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 पोर परफॉर्मेंसेस यार. इंग्लैंड इज जस्ट shocked everybody, not in a good way, in the worst way possible. They've been shocking the entire World Cup, and they're on the brink or of exit, and it doesn't look like the best scene for England right now. कल बड़ा मैच है, कल भी तगड़ा मैच है. कल साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान है. डू और डाई फॉर पाकिस्तान. क्या पाकिस्तान शुरू हो जाएगी. 400 रन देखो इंग्लैंड के. या मैन सीरियसली 400 रन
इंग्लैंड जस्ट कोलैप्स वेरी पोरली. आई थॉट कुछ ना कुछ करेंगे. जॉर्ज बटलर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोल रहे थे कि अब जो हो चुका, अब उस पर ज़्यादा सोच नहीं सकते, अब आगे देखेंगे क्या होने वाला है. नाउ वी देयर इज लिटिल मार्जिन फॉर एरर. एंड देन अगेन आप देखो पैटर्न ऑफ प्ले सिमिलर था. आओ सब मारने गए, सब विकेट फेंक के चले गए. नो वन बिल्ड इन इनिंग्स. These are certain problems with England that they're facing. Are they thinking too much कि इन लोगों का template सही है? Should they have changed the template instead of build innings? They weren't able to do anything. Uh, yeah, pitch, red brown, all, yeah, 100%. I think the pitch also, like, again, Bangalore की pitch देखो भाई, it wasn't that much to do. थोड़ा slow हो रहा था, I agree with that. Slow थोड़ा बहुत हो रहा था, but I don't really think a lot of thing was wrong with the pitch of Bangalore. श्रीलंका भी देखो आप, इतनी सुकून से 2 विकेट लूज करे बाद they settled out 114-15 रन पार्टनरशिप. तो आज की पिच, कल का पिच है यार, कल तो चेन्नई की पिच है. कल बाबर आजम ये विकेट पे गलती कर दिए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो कल मालूम होगा कि पिच कैसे रहेगी. बट यूजुअली जो हम देखे अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फर्स्ट बैटिंग करना इज ऑलवेज सूटेबल हियर. सेकंड में दे माइट बी ड्यू फैक्टर, दे माइट नॉट बी ड्यू फैक्टर. व्हाट वी सॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ड्यू फैक्टर. पोस्ट 3 विकेट्स जो इंडिया लूज करे थे, उसके बाद आप देखो थोड़ा बहुत बॉलिंग करना डिफिकल्ट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए. लेकिन आप अफगानिस्तान के उसमें देखो जिस तरीके से, स्पिन विल बी अ वेरी क्रिटिकल रोल टुमारो. एंड आई फील मे बी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आगा सलमान कल खेल सकेंगे, because he does bowl leg spin as well, and maybe you might see an exit from Source Shakil, or I don't know if Babar Azam decides to promote himself up and take out Imam ul Haq. That is also an option, but अभी के हिसाब से it's going to be a very thrilling match to see. England तो भाई चकले लग गए इंग्लैंड के. बहुत बुरा मसला हो गया इंग्लैंड का, and they're potentially packing their bags probably. I think उन लोगों को they have to play India, they have to play who else? I'm just going to look at the fixtures very quickly. इंडिया है तो एक शोर खेलना है, पाकिस्तान से खेलना है उन लोगों को. उसके बाद आई थिंक दे हैव ऑस्ट्रेलिया, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ बिग मैच टू विन. एंड देन द नेदरलैंड्स. तो देखो भाई, अगर अपन मैच कर रहे हैं इस पे, इंग्लैंड हैव टू बीट इंडिया, हैव टू बीट एवरीबॉडी. उनके हिसाब से तो वो नहीं, बट द गुड थिंग फॉर देम इज इफ दे प्ले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ना रोक सकते तो ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट वहां खा सकते हो ना. अगर इंडिया को हरा दिया, इंडिया के 2 पॉइंट खा सकते. तो ये जो टॉपर टेबल टॉपर्स हैं उन लोगों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा न्यूजीलैंड हो गई, जैसे इंडिया हो गई. बट हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया को पड़ सकता है फर्क. पाकिस्तान अगर हारी तो दूसरे जो फिक्चर्स है वो भी उनके फेवर में गिरना जरूरी है. जैसे पाकिस्तान की हार हो गई, उसके बाद श्रीलंका की हार हो गई, अफगानिस्तान की हार गई. दिस इज व्हाट इंग्लैंड इज बैटलिंग राइट नाउ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर बैटलिंग विद देमसेल्फ. दे हैव गॉट टू लर्न हाउ टू विन मैचेस, दे हैव गॉट टू लर्न हाउ टू प्ले ऑन दिस इंडियन पिचेस. भाई कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था उनकी बैटिंग. नो टेम्परामेंट, नथिंग. इट जस्ट लुक लाइक आओ मारने की कोशिश करो और विकेट खो के चले जाओ. इट वाज वेरी कैजुअल from England. The approach of cricket has been very casual. It's not been the best, and they really need to do something about their match against India, because India में लखनऊ में वी कैन से कि स्लो पिच हो सकती है, मे बी. अभी वी डोंट नो, री डला गया है पिच, फिर से डला गई है, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है उधर सिचुएशन. बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी नो फ्रॉम द आईपीएल इज इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लोअर पिच. ग्राउंड थोड़ा छोटा है बट पिचेस थोड़े स्लो हैं, सो उधर रन्स मारने मुश्किल होते हैं. तो अभी इंग्लैंड ये फ्लैट सर्फेसिस पे अगर इतना स्ट्रगल करी रन्स मारने के लिए, तो आगे जाके क्या ही होगा. इट्स जस्ट बिन वेरी शॉकिंग कि भाई ये लोग डिफेंडिंग चैंपियंस थे, ऐसा टेम्परामेंट नहीं लेके आए, ऐसा. Or when they're playing also, it looks like a very normal team is playing. It doesn't look like England is playing. They want to score 300s, they want to score 400s, but they're not getting off the mark. Multiple probably reasons, like maybe they're just not being able to understand the pitches, maybe they're not. See, अगर swinging conditions में आप मार सकते हो तो flat में तो और भी अच्छा मार सकते हो. So it doesn't really make sense कि why England not being able to get off the mark. Team selection is there. Something that the team selection was wrong. जेसन रॉय का जो इनको निकाल दिया गया था, बेन स्टोक्स को जो ला दिया गया था, was that the right decision? Could they probably utilize that spot better? Then spinners, खाली आदिल रशीद एक proper spinner है, मोइन अली हैं, but again मोइन अली is like a part-time bowler. Now in the one-day circuit, most of the players are there. जॉर्ज बटलर है, मोइन अली है, इन लोग हैं, but it's just the selection at the end. Was it necessary? Few calls that they made. Fast bowlers, Markwood pitte gaye. Markwood again did not make a heavy impact. And then again उधर injury हो गई थी उनको, रीस्टॉप लीग को, उसका भी एक सब आया है, but again he'll probably not going to get a chance. वो देखना ब्रायन ट्रांसलेशन, is there someone else that they could have taken? बेस्टो इंजरी से वापस आए, उनका गेम उतना ग्रेट नहीं है. आगे भाई चाय ला लेके भाई, अब आके बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में. So भाई, potentially the team that everybody had in the top four, is on the brink of exit. What are your comments? I'm shocked, man. Stunned. मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा how they got smashed. बैंगलोर में perfect 400 मारने की विकेट थी, 400 नहीं but at least 280 300.
and they got completely destroyed. They got smashed. They got banged out of the park, and they're going back to London, bro, without anything. They're done, man. Out of this tournament, Yeah, it's finished. 4% chance They're according dead. to the reports. 4% का chance है इंग्लैंड के पास. अब वही है कि भाई there are 2 matches are against big teams, 3 matches like अगर आप देखो, they have England Pakistan, England India, England Australia, and England Netherlands. So they need to make sure कि भाई South Africa drop points, Australia drop points, Afghanistan drop नहीं points. होगा. It's too far fetched. पिंडा भी नहीं होता. There's no way. They're out there, dead and buried. They need to book their flights to London. And Thomas Cook it. मैं आपको सही बोल रहा हूँ. I said that England would win the semi-finals. I thought England would win this World What Cup. do you think went wrong, man? Like I said, like what I feel, the temperament of England has not been up to mark. The intent doesn't look like it's there. They look very run down. They look a little exhausted. If you're able to hit on swinging pitches, then why aren't you able to hit on a flat surface? No, I think it's nobody's in form. पहला ये है. आप intent के बारे में बोले, they don't look hungry. They don't look like they're in it to win it. मेरे को नहीं दिख रहा कि भाई energy भी नहीं दिख रहा. But it's very difficult to point out one thing. It's just I think it's a team that started 5-6 years ago, and now a lot of them are on the verge. But still, उसमें से अगर 2-3 प्लेयर भी चल गए तो उन लोग जीत जाते थे एटलीस्ट 2 गेम. इतना टैलेंट है उन लोग के पास. साथ पूरे नहीं चल रहे. Like that's the first time I've seen it. कोई भी नहीं चल रहा. वो प्रॉब्लम है. वो इशू क्या है? Because बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थिंक इन खाली एक वनडे सीरीज के लिए जो बांग्लादेश आई थिंक ऑलमोस्ट एक हरा दिया. चल रहा है शायद मेरा. चल रहा है. It's on. मिक ब्रो. मिक. माइक ब्रो. नहीं आ रही आवाज मेरी. आवाज आई थिंक आ रही होगी. खैर. हाँ. तो जैसा मैं बोल रहा था आपको कि भाई इट वाज लाइक एक साथ पूरे फॉर्म में नहीं है तो उसका मसला क्या है. चलो 2-3 प्लेयर आपके नहीं चले. पेयर तो नहीं चल रहा. रूट नहीं चल रहा. बटलर ये लोग तो अभी आईपीएल में खेल के आए भाई. जिन लोगों को तो मालूम होना चाहिए. दे शुड हैव कम बैक टू द कैंप एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस एंड मूविंग कंडीशन में. अब ऑस्ट्रेलिया को इतना बुरा लाइक टेस्ट मैचेस में, चलो टेस्ट में, बट यू आर प्लेइंग लाइक अ वनडे सर्किट. What do you think exactly? Like again, you said intent. I said intent. You said hunger. But apart from that, it's got to be some other issue. Let the team complexion, like Ben Stokes को एकदम आप लास्ट में ला लिए. वो प्रॉब्लम नहीं था मेरे हिसाब से. मैं अभी भी वही करता था. If I'm Josh Butler, I know people will have different opinions, मगर it's about एक चीज मेरे को डेविड मिलान जो रूट एक टीम में रहना मेरे को नहीं सही दिख रहा था. I think they needed aggressive opener at the top, take the pressure off Besto थोड़ा सा टाइम लेता है उन्हें या मारता उन्हें थोड़ा सा टाइम लेता है. लेकिन you need somebody like Jason Roy there, Phil Short, like I'm saying, वो मेरे को कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रही थी ओपनिंग बैटिंग में. दूसरी चीज अगर आप देखें उनकी बॉलिंग ये पिचेस पे इफेक्टिव नहीं रही. मार्क वुड तो पिट जा रहा. क्यों हो रहा? लुक मार्क वुड इज वन. आई एम सरप्राइज्ड आउट. द रेस्ट आई एम नॉट सरप्राइज्ड. क्रिस वोक्स उन्हें इंग्लैंड में ही परफॉर्म करता. सैम करन छोटे बाउंड्रीज में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ इफी काइंड ऑफ डिसीजन. रीस टॉपली इज नॉट प्रूवन इन दिस कंडीशंस. सो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम विद द बैट. I think Joe Root, his strike rate has been an issue. It's puts pressure on the other batsmen. Ben Stokes coming out of injury, he doesn't look like he's in the zone. Yeah. Josh Butler is completely out of form. Completely out of form there. And someone like a Besto getting starts, he's not being able to compare. He's also out of form. So there's a lot of things there. And the main thing for me to explain is just an amazing team going through a very rough patch. That's the main what thing. What do you say? That काफी of these players that come to my mind, Josh Butler, Johnny Bairstow, they played a lot of domestic as well. उन्होंने देखो आप IPL खेले फिर 100 खेले आने से पहले. तो काफी उन्होंने क्रिकेट आप बोल सकते हैं कि सब सेम है. बट दैट सेम टीम में सेम प्लेयर्स एंड ऑल ऑफ टुमारो. अच्छा कौन 50 होगा? You are prediction. अच्छा for tomorrow match. We'll get to tomorrow's match. So I think again like this team, I feel a little bit is tired as well. What we were explaining with the Pakistan situation, पूरी similar kind of situation दिख रहे हैं. Not that workload बोल सकते, but आप देख लो ना इंग्लैंड बांग्लादेश के लिए फिर Ashes में most of this team played. Ashes के बाद फिर 100 IPL, थोड़े लोग IPL को गए, थोड़े लोग 100 खेले. So back to back cricket भी, do you think that would be a problem for England? No, I don't think it's a problem, but this will come up. आपको ऐसा दिखने वाला है कि like जब इंडिया याद है 2021 में they got knocked out of the group stages. They said I did too much IPL, too much domestic, this that, and now India is the best team in the World Cup. So I think it's just there are valid reasons at the time, and we think that the valid reasons, but it's just a team in poor form. India had it in 2021. Right now England is having it. We've seen Australia also have poor form in the recent past. In the last World Cup, Australia playing at home T20 and they didn't make it to the semis, right? So it's just I think it's a really good team. Maybe towards the end of their peak, but also at the same time they're just all in a rut. It's because आप मेरे को बोलो आप जो भी players है उसमें से
if I tell you first you have to captain this side, you'll say, bro, I'll win the championship for you. 100%. There's nothing that you would change in this team. Ek changes, you can say, look, against South Africa, the combination was slightly off. मोइन अली को नहीं निकाला, You know, मोइन अली को जो निकाल मोइन अली को नहीं निकाला, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी मोइन अली को नहीं निकालना था. Yeah, and what the problem is though, they've used all the 15 players, they've used all the resources, and nobody is working. They've tried पूरा टीम स्क्वाड ट्राई कर दे, कोई भी क्लिक नहीं कर रहे. इज जस्ट अनफॉर्चुनेट एंड you can't make any excuses. They will have to have a stern meeting. They'll have to take a lot of एक स्टेटमेंट निकाले ना ICB, yeah, that you have to support the team बोल के. हाँ वैसा बोले थे. वो तो बैगन की बात है. आपकी टीम बैगन में, आई मीन सपोर्ट तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगेन आई थिंक इंग्लैंड जिस टेम्परामेंट लेके, जो इमेज लेके आई थी वर्ल्ड कप में, एक डोमिनेंट साइड की, कच्चा खा लेने वाले, सुक्का मार देने वाले, दे माइट स्कोर 300 600 ऑन फ्लैट पिचेस, लुक व्हाट दे डूइंग ऑन स्विंगिंग कंडीशंस. बट दिस इंग्लैंड, इट लुक लाइक अ टाइगर. दूर से जो शेर दिख रहा, सामने आके बिल्ली दिख गई, वैसा मसला हो गया आई थिंक फॉर इंग्लैंड. एंड Lankan Lions, Angelo Matthews, 37 years old, bro. 5 overs. उसका तुम इंटरव्यू देखे मिड इनिंग्स में, he said exactly what I said, but he proved himself wrong. He proved me wrong. He said they asked him, "Did you play? Were you practicing?" He's like, "No, it's raining like cats and dogs in Sri Lanka. I haven't played in a long time. It's just mentally, I'm preparing myself. That's it." वो पेट ले लेके सब ले लेके आके क्या? उन्हें टेस्ट मैच में कुछ 100 मारा हाल में, I think. It's been a while though, like against Pakistan, right? Like it's been a while. This guy is not playing cricket, he's chilling. But this is what experience does. He proved me wrong, man. I'll be honest with you. कल तो तुम लाइट ले लिए थे. मैं लाइट ले लिया था. Like I'm not gonna, like I never 37 पेट ले लेके 5 overs. और रन आउट भी लिया. 2 wickets. So you know what he did? He saw the pitch. And this is where the game changed for Sri Lanka. He's an experienced player, right? उन्हें एक कटर डाला, इससे थोड़ा सा grip हो रहा है, इन लोग फंसने वाला है यहाँ पे. And he exposed that. Then he got the wicket, and then they got the spinners on from the other side, and पूरा trap कर दिया. He told Lahiru Kumara, आप भी कटर डालो, आप भी slower डालो, ये भी डालो, and he completely. So that is where the experience. मुस्तफा बोला, देखो शाना का भी out था. So they didn't have like a leader kind of a situation there, and someone to explain conditions to the youngsters. पूरे young है, Vellalage, Lahiru, and all of these guys. So अच्छा हो गया श्रीलंका के लिए. 2 wins into. Now on to India. They have going in, they will brimming with confidence. If they get 2 more victories, then Lanka could come on top 4. Yeah, they can. Well, I'm not going to buy that. You said you put them in the top 4. I will show you the record. I'll show you the recording. This guy put Bangladesh and nice watching with Sri Lanka. Asia, मतलब मैं recording बता दूंगा भाई. भाई और दूसरी चीज मैं बोलने वाला था, कुशाल मेंडिस, उसको उन्हें जो है आपको 2003, he's I think close to our age. 2003 में he was a big fan of Arvinder De Silva, and I think that's the last time he got a glimpse of him. And then he played a under like 16-17 tournament, and he met Arvinder De Silva. Arvinder De Silva told him कि भाई one day you're going to captain Sri Lanka. And then look at the circumstances. उसके बाद he's been playing cricket for so long. He's the wicket keeper. उन्हें उसकी टीम में भी issues था. He got COVID में उन्हें break करा था rules. बाहर चले गया chill करने. याद है? He broke the rules and everything. So ups and downs हो रहे थे. Then now he started to get a bit of consistency in this World Cup, and he got captaincy out of majburi. It's not like he. I don't think he wanted the captaincy or anything like that. उसको कोई option नहीं था. And now look at him today. The way he captained. I think he did a marvelous job. जो bowling changes करा, England को जैसा फंसाया, he kept rotating the bowlers to play Angelo Matthews. He's played under. He started his career he's played under Angelo Matthews, and now he's captaining him. The way he marshaled his troops today. Also, hats off, man. batting of Sri Lanka now improving. Samara Vikrama is that anchor that Sri Lanka need. That guy who set sails and रुक जाता उन्हें. And आज जो 114 या 15 रन की पार्टनरशिप थी निशांका एंड समर वगैरह, तो बैटिंग ऑल्सो श्रीलंका की काफी अच्छी लगने लगी. एशिया कप में जो थोड़े बहुत गैप दिख रहे थे, बिगिनिंग ऑफ व्हाटएवर द वर्ल्ड कप दे हैड, इट्स सम वियर्ड वे लाइक मुस्तफा सेड, सर्कमस्टेंसेस आ रहे, बट वो सर्कमस्टेंसेस फायदे में लेके आ रहे साथ में. तो अब नहीं बोल सकते इंडिया के अगेंस्ट दे हैव अ डिसेंट रिकॉर्ड, लाइक दे कीप मीटिंग इंडिया. आई मीन इंडिया यूजुअली स्मैशेस देम, बट ये सिचुएशन में इफ दे गेट अनदर विन, then it becomes interesting, the top 4 is. I mean, as an Indian fan, if you lose one game before the semi-finals, I don't think it's a big issue. Everybody actually wants, I think everybody wants India to lose one, just that they... Yeah, it might be a thing, but I don't see India losing right now, man. I don't know where. Semi-final में फंस सकते हैं. या मैं तो खुला बोल रहा हूँ पहले से, semi-final में फंस सकते हैं. वानखेड़े में अगर particularly it's in the वानखेड़े, they have a problem there. But right now India is playing outstanding cricket, so it looks difficult to beat them. But yes, Sri Lanka will have a chance. England to Lucknow में, you think they have a chance against India? I don't know. वो मैच तो खत्म हो गया. England don't have any pressure now, so I don't know how they'll play without any pressure, because they know if they're on, like
डॉन तो बोल रहे भाई ब्रिंक ने ऑन द वर्ज नहीं, पूरा निकल ही गए मिलना. बट अगर इंग्लैंड थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलने गए, दे कुड प्रॉब्ली टर्न आउट टू बी डेंजरस. लिविंगस्टोन, मोइन अली, राशिद, आदिल रशीद, ये पूरे एक साथ अगर चल गए, बिकॉज लखनऊ जो आईपीएल से मालूम हम लोग को स्लो विकेट है. मेरे बात बताओ, वहां पे थोड़ा सा टर्न डाल दिए तो ड्राई कर दिए तो फिर वो नहीं मालूम, वो अब देखना पड़ेगा वहां का क्यूरेटर, अनलेस इंडिया लूज एंड द क्यूरेटर लूजेस हिज जॉब. But we'll come to know it's going to be England, spinning, bro. and It's gonna be England have spinning. nothing Ashwin to is going to play. and England have nothing to lose, so Ravi. it makes them a little bit dangerous for India. It does make it a little dangerous, लेकिन I think the way England is playing right now, there's no confidence there. If you make it a bit of a tough wicket, India play 3 spinners, फंसा देते भाई England को. वो तो रहा संडे को. कल के मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, बाबर आजम जॉब ऑन द लाइन versus like Temba Bavuma तो है नहीं उधर, तो you know. Eddie Markram, my captain, my legend, Sunrisers Hyderabad. He is the best captain right now in the World Cup. The best wicketkeeper is class, and the best all-rounder is Marco Jansen. All in one. But they have a tendency, what we saw in the T20 World Cup and this 50-over World Cup, एकदम कहीं ना कहीं से उनको पिच पंच मिल जाता. Red soil है या black soil है? कल देखना पड़ेगा सर कौन सा. पाकिस्तान नेक्स्ट मैच विन होगी या नहीं होंगे भाई, बोल. पाकिस्तान का नहीं बोल सकते भाई, अगर हम बोल सकते थे तो पाकिस्तान क्या करेगी फिर. बट पाकिस्तान हैव टू डू समथिंग. रवि एश विल बी बैक probably for लखनऊ का गेम. डॉन पंटर को बोलो आओ इधर बोल के. पंटर को बोलो इधर आओ. तो मुस्तफा कल के मैच के बारे में जी, क्या आपकी राय क्या है? South Africa is very close to my heart. It's a really good team, the way they play. 3 of their players play for the club that I support, and I think they're an amazing team. लेकिन this is where Pakistan come in the tournament. अगर आप देखें पिछले सालों में, even 2019 वेस्ट इंडीज से 100 ऑल आउट, you know, इंडिया फोड़ के रख दी थी, ऑस्ट्रेलिया फोड़ के रख दी थी. Then came the game against South Africa, the game against New Zealand, and they started you know, मतलब जिंदा हुए. अंडरटेकर क्या है बोल रहा, जब तक फटती नहीं, जब तक ये लोग खेलते नहीं, वैसा मसला है इन लोगों का. लास्ट डे पढ़ के एग्जाम पास करने वालों में से पाकिस्तान. अब मेरे को ये बोलो, पाकिस्तान आर बेटर चेसिंग, but South Africa are better batting. Now, if you're Babar Azam, you win the toss and you what he did against Afghanistan, he batted first because they're expecting dew and stuff in the second half, which didn't work out in this. No, he didn't expect dew. He batted first because he expected turn to be slow and everything. Magar wahin pe phas gaya. So tell me now, what would you do if you're Babar Azam tomorrow? Do you play to your strength or you play? I would play to my strength. I would not get carried away by the conditions and the talking and everything. Just believe in your abilities as whatever your team suggests. Follow your team's requirement, because team will be more comfortable if they know what they're doing and they're strong in what they're doing. Now is the how do you go about the 11 क्या डालेंगे आप? आगा सलमान को, मेरे को लग रहा है आगा सलमान को लाएंगे चेन्नई में, बिकॉज टर्निंग विकेट अगर निकल गए तो ये बंदा लेग स्पिन डाल सकता. अब आपके जितने भी आई थिंक लेग स्पिन डालता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद बाबर आजम अगर प्रमोट हो गए, इमाम को निकाला, दैट्स अनदर चेंज दैट दे कुड डू, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन. बाबर विल probably predict will probably play Imam because of whatever friendship. Form tells us that South Africa will win, but history South Africa have played, not even history, South Africa have played the last 2 games in Mumbai. Then in Delhi they played a game. They love batting on these flat wickets, and they will outrun you, they will outscore you, they will smash you. But one game where the ball was swinging a bit, was turning a bit, was against the Netherlands. You saw Rudolph Van der Merwe. He picked up a few wickets. Ackerman picked up wickets, and they got troubled. So in Chennai wicket, there should be turn on offer. There should be. The problem is the Pakistan people don't know how to turn the ball. But like Shadab का second ending. अरे यार फैस तुम भी आके टर्न कर देते वैसा. That is not like a professional international cricket. I'm Jaddu bro. But yes, हमारा यही है कि अगर आप देखें, like नवाज, शादाब को भी खिलाया, चाचू को भी खिलाया, you play even I don't think they should play Sama Mir. I think maybe Aga Salman, चारों को खिलाया. आप फंसा सकते साउथ अफ्रीकन टीम को ये पिच पे फंसा सकते, लेकिन वही है ना, वो आप जो बात बोल रहे हैं ना, टर्न करना आना इन लोगों को. जो शादाब सिर्फ लास्ट में कर रहा था, लेग पे डाले तो फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल रहा था उसको, तो वो मसला है. हाँ वही है. हाँ तो स्पिन करने सीखना है उन लोगों को. अब वो कल रात तक है उनके पास, कल सुबह तक है स्पिन सीखना. अब देखना फास्ट बॉलर्स भी कैसा डालते हैं. अगर अफरीदी को भी थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, यू कैन सी साउथ अफ्रीका कैन गेट स्टक. दे नीड दैट फर्स्ट 10 ओवर में 2-3 विकेट फ्रॉम शाइन अफरीदी. और इन लोग का ये रहता है, दे लुक फ्लैट एकदम से व्हेन देयर कैसा आप ही बोल रहे थे, लास्ट मिनट होमवर्क कर रहा था एग्जाम के लिए देगा माय लाइफ, एंड टुमारो इज द टाइम. अगेन आई वुडंट से इट्स डू या इट इज probably tomorrow. A lot of YouTubers are going to be ready on their spot, and because Pakistan, if they lose, then it becomes almost Pakistan hari to khatam. It's going to be very difficult for them. And again, I mean,
you still have who to play from Pakistan. You have to play New Zealand, you have to play England, and then you have to play I think one more team which Bangladesh. Yeah, Bangladesh. So even all of those teams are equally good right now considering the table. पाकिस्तान के लिए वही है कि भाई they need to bat, they need a person to take up the role as the anchor and just Bhai, there make is a lot one of guy runs. there. He just needs to freaking step up. Yeah, Babar Babar needs Azam to step up and other people around him Bobby need to play is- faster, bro. That's the thing. Daily Sports बोलते गूगली करनी होगी भाई उसामा और शादाब को, शॉर्ट बॉल से बचना होगा भाईजान. भाई गूगली भी गूगली करना है, करने भी है, गूगली करना है, लेग स्पिन भी करना है भाई. वो लेग ब्रेक भी बराबर नहीं पड़ रही उन लोग की. कभी शॉर्ट पड़ रहा, कभी फुल टॉस आ रहा, कभी इधर आ रहा उधर आ रहा. आप 6 बॉल एक लाइन लेंथ पे डालो आप, ठीक है, उसमें से आप 5 लेग स्पिनर डालो, एक गूगली डालो, देखो फंस जाता बैट्समैन, स्पेशली चेन्नई के विकेट में. ऐसा नहीं है कि मैं बैंगलोर बोल रहा हूँ या इधर बोल रहा हूँ उधर बोल रहा हूँ. आई एम सेइंग इन चेन्नई वेयर इट्स अ ड्राई सरफेस, यू हैव टू कीप अ कंसिस्टेंट लाइन इन लेंथ. भाई और वही हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर बोल रहा मार्जिन ऑफ एरर इज लो, मार्जिन ऑफ एरर इज लो, बट वो मार्जिन ऑफ एरर की अम्मा बहन कर दे रहे, वो मार्जिन ऑफ एरर में ही डाल रहे हो. सो दे लाइक ही सेज इन एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस द एरर बहुत कम है. आप स्ट्रेट विकेट टू विकेट डाल दो भाई, कुछ ना को करो भाई, खाली विकेट टू विकेट डाल दो. That is, and then the fielding, that's another joke. Fielding तो छोड़ दो आप लोगों को, फील्डिंग करना कल देखो मगर कल देखो आप, कल लोगों ने उन्हें लगान में लाखा आके जो मंदिर में बंद होके नेक्स्ट डे कैच लेता देखो. कल आप देख लो रिजवान आके ऐसा स्लिप का कैच पकड़ेगा विकेट कीपिंग से. कल पाकिस्तान भाई देखो रिजवान को भी लाइक चला के खेलना है गेम. देयर इज ओनली वन बैट्समैन इन दैट टीम हु इज प्लेइंग गुड. इफ्तिखार अहमद चाचू इज द ओनली गाय हु इज प्लेइंग गुड क्रिकेट मैन. थोड़ा एग्रेसिव खेलो आप, डर के मत खेलो आप. कल हार गए तो आउट है, सो गो एंड प्ले एग्रेसिव. एंड साउथ अफ्रीका इज आल्सो मर्क्यूरियल टीम. दे आल्सो आर हॉट एंड कोल्ड, कभी इधर कभी उधर. सो यू कैन अट्रैक्ट देम. राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज प्रोबब्ली द सेकंड बेस्ट टीम, थर्ड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट आफ्टर इंडिया एंड न्यूजीलैंड. सो इफ यू वांट देम टू if you but if you beat them, that will give you immense confidence going into the last time South Africa lost to Netherlands. Pakistan somehow beat who did they beat? They beat someone in T20 final में पहुंच गए थे. So you never know. न्यूजीलैंड को मारे थे सेमीफाइनल. हाँ, न्यूजीलैंड को मारे थे. तो वो हिसाब से अगर यहाँ मारे तो you might see much in the final, but I'm just again far-fetched here. Like Mustafa said, they need to make sure that they step up tomorrow. कल कोई excuse नहीं है भाई आपके पास. Potentially you're going home, you're going to pack your bags. भाई मगर एक चीज मैं बोलूं, वहाँ पे and South Africa जो खेल रही है मार्को यानसन की हाइट ब्रो, वहाँ पे क्लासन है. क्लासन को निकालना बहुत जरूरी है because he is an amazing player of spin. Amazing. He'll play on a turning wicket also. He'll play everywhere. उसका विकेट बहुत important है. I think you can Quinton de Kock might have trouble. Soon as Quinton comes on for his opening the batting, you bring Chachu and you play with power play. Off spinner, it could be an issue against Quinton de Kock. It has been in the past. He has dismissals. He's had problems with off spinner. You bring in Chachu, right? But when Klaasen comes in, that's where maybe you try. So for Klaasen, yeah, we I think we just क्या बोलते हो ना, मार शार्डुल टाइप ऑफ बॉलर होना, मारने के मार ले कहीं ना कहीं से कुछ कटर मार के टॉप एज समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट Klaasen to get out on. वरना उसकी तो फुट मूवमेंट भी जरूरी नहीं है यार, उन्हें हिप से मारा पूरे छिके. ये पंटर बोला पाकिस्तान हारे तो रीजन क्या देते अब? रीजन यही देंगे कि भाई आई थिंक रीजन तो एविडेंट है. मुस्तफा जो बोला like everybody is exhausted, workload management, but the other reason that they'll just give is like bowlers didn't play well, fielding wasn't good, 8 kilometers was not बराबर enough for us. उन्हें बैटर्स को नहीं बोलता कुछ भी, खुद बैटर है बोल के. मगर भाई टीम को बॉडी लैंग्वेज पहले अच्छी करनी होगी. हम लोग बॉलिंग अच्छी करे तो बैटिंग अच्छी नहीं करे, बैटिंग अच्छी करे तो बॉलिंग अच्छी नहीं करे. So it's no balance, there's no proper flow across all departments is what he said. Yeah, body डेली स्पोर्ट्स बोल रहे हैं भाई टीम को बॉडी लैंग्वेज पहले अच्छी करनी होगी. 2 केमो में बटी हुई लग रही है पाकिस्तान टीम. हाँ नहीं देखो मतलब आई थिंक दैट when you're losing, everything looks bad. Body language भी वो जाता है, थके हुए दिखते, वो दिखते. It's about maybe a couple of individual performances. The captain has to lead from the front. It's simple as that. उसको आके बताना है कि भाई मैं आके 100 मारूंगा. So get everybody together. Rohit Sharma style. Yeah, and then like your main Rizwan needs to come to the party. Your top order needs to come to the party, and then like they have to. This is where you have to support each other. If you win, then you become a dangerous team. कल अगर आप हारे तो you're done, right? तो कल अगर हम लोग जीते, then they'll start becoming a dangerous team. अगर 100 हुई वो पाकिस्तान की टीम में, आप समझ जाओ पाकिस्तान जीतने वाली. भाई ये भी भरोसा नहीं है. बाबर 100 मारते कील रहे 100 मारने. अगर 100 पड़ गया तो आई थिंक दे विल हैव साइकोलॉजिकली हां भाई 100 तक एक बंदा तो पहुंचा तो थोड़ा वो दिमाग में आएगा.
But South Africa is not an easy opposition यार. वो भी है कि भाई South Africa अगर मारना शुरू कर दिया, only hope that Pakistan have that wicket should be a little bit turning. वहाँ South Africa फंस सकती है. Yeah, वहाँ पे, and even when South Africa is batting second, they could have trouble, right? And also, if you see, Pakistan need to bat the 50 overs wherever they win, because South Africa have, if you've noticed, even when they've dominated teams, towards the end they struggle. Towards the end, like power play में बेहतरीन रहते, वहीं पे उन लोग मैच खत्म करते. पावर प्ले में आके यानसेन, रबाडा, उन्हें कोने लजार्ड या हिम, एनगीडी पूरा खत्म कर देते. कल एनगीडी खेल सकता 100 विकेट पे. एनगीडी तो इंजर्ड था इसलिए नहीं खेला. I don't know if he's fit and he'll play, but उन लोग पावर प्ले में खत्म करते ऑपोजिशंस को. पाकिस्तान हैव टू मेक श्योर दे डोंट गिव अप विकेट्स, प्ले एट डिसेंट स्ट्राइक रेट, फिर लास्ट 10 ओवर्स में आप वहां पे एक्सप्लोइट कर सकते. साउथ अफ्रीका भी ड्रॉप करते कैचेस, उन लोग को भी प्रेशर में लेके आ सकते. बट यू लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम साउथ अफ्रीका's point of view, you play the way you're playing, play fearless cricket. If you lose, it's okay, but it's about keeping Pakistan under pressure, right? Take your chances, and the way you're batting really well. Do you see any bowling changes for Pakistan? Honestly, no. I think this तरीके से इनका press conference. I think you have to bring in Nawaz for one of the two, man. You could bring in Nawaz. दो leg spinner खिला के क्या करेंगे आप? वो तो बट फिर वही है ना कि अब भाई किसको निकालेंगे. I mean शादाब को शादाब बैटिंग निकाल दो. I think उसामा को निकाल के नवाज आएगा. ऊपर कुछ चेंजेस होना. I don't know फखर is fit or not. अभी तक तो कुछ अपडेट आई नहीं. फखर अगर आ गया तो देन इमाम sits out, but फखर की भी क्या ही गारंटी है. Bowling wise, I think वही हसन अली के ऊपर, शाहीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहेंगे कल. शाहीन needs to get a snake from somewhere in the first, and he needs that Shaheen kind of spell, that first power play spell. Yeah, Shaheen and bhai Haris Rauf. Haris Rauf, so he needs to variate. That idiot has good slower ones, man. But that Harry needs to meet Sejal and bowl better, man. This guy is not bowling well, and this is a big problem. Unech, like T20 World Cup में he was bowling so good. Apart from that Virat Kohli thing, 10 ओवर की बॉलर नहीं दिख रहे उन लोग. मगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल उन लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट गेम है. पूरा मोमेंटम शिफ्टिंग मैच हो सकता, बिकॉज इंग्लैंड आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स, and look, Australia are coming back, but Pakistan can put pressure. They can apply the pressure over there. And Australia still have to play England. Australia have to play who else? Australia have to play England. Australia have to play, I think, Bangladesh. Australia have to also play New Zealand. So they have big opposition that are coming their way as well. So Australia का भी easy नहीं है, but they're looking hungry right now. They're getting back to their thing. Shaheen, even if he bowls well, catch वही है ना यार, फील्डिंग तो वही है. लास्ट उसमें वही बोले कि भाई वन डिपार्टमेंट अगर पास हो रहा है तो दो डिपार्टमेंट फेल हो रहे हैं. दैट्स नॉट व्हाट गोना हैपन. कल पूरे लोग सिंक होना जरूरी है. कल हर चीज हैज टू गो ऑन पॉइंट. देयर कांट बी एनी मिस्टेक्स, एंड अगेन बैटिंग नीड्स टू बी वेरी गुड for Pakistan. Again, they're not bad players of spin, so even if it's turning, it's an advantage for Pakistan. So देखना पड़ेगा कल क्या. Would you play Shamsi tomorrow? Yeah, I think Shamsi can play tomorrow. He hasn't played yet, right? Played yet, but again, if the situation demands for it, they have enough. And Keshav also gets it to spin a bit nowadays. So I think they could get Shamsi in, but play two spinners. Lizard को निकाल सकते हैं. Yeah, play two spinners and think Kodse को तो नहीं निकाल सकते. उन्हें जबरदस्त bowling कर रहा है. I think Riza Hendricks भी bowling डालता. Riza Hendricks also can bowl a bit. If Bavuma is fit, does he play? I don't think so. Bavuma will play. Like, it's hard for him to get back into this team unless he's a technically good player of spin. Then maybe they'll. But right now, खबर ये है कि he's injured, right? It's खबर तो ये है कि he's injured, not कि भाई they were against him. And even if he has to sit, I think Bavuma is one of those players who won't mind doing that. I mean, yeah, like, but Riza Hendricks एक मैच में 50, एक मैच में fail हुआ. He's played well. Unlucky है run out. No, it was like bowled. हाँ. Sorrowful. Keshav Maharaj underrated actually bowling. Yeah, bowling very well, wicket to wicket, good line in length. But yeah, it's not, I think, picking up a lot of wickets. थोड़ा उन्हें विकेट्स लेना उन्हें एक्चुअली मैं एक बॉल याद है लास्ट गेम में था या उससे पहले उन्हें मिडिल स्टंप पे ऐसा करके ऑफ स्टंप पे बीट करा उन्हें बैट्समैन को. ही इज एक्चुअली bowling well. He is very underrated. He's also he was vice captain and he also led South Africa as well a few times against England, I remember, on a tour. So he has a mature head on him. I'm sure he's also advising Markram and everything. But yeah, man, South Africa has been very entertaining and they'll continue to entertain. They will lose games, they will win games. मगर भाई जो क्रिकेट खेल रहे, this is what we expected from England and they're doing it. They're like smashing it out of the park. Look, another thing about South Africa, there's another weakness over there. अब यानसेन तक आ गए. अगर यानसेन और क्लासन का जो पार्टनरशिप वो तोड़ दिया, then you're into the tail. Yeah. Yes, I know Maharaj can bat, Kodse can bat, but you have that opportunity to sneak through. There's also one player who's going under, I mean, not under the radar, but again, like David Miller, I think उन्हें भी. Yeah, man. He's Miller, if it's in the arc, it's out of the park. David Miller, man. This guy is world class. Gaps of 34, 35, 40 quick runs.
that's also putting additional pressure on the bowlers, particularly in the middle overs जहाँ पे आप sort of you want to take out a wicket. Pakistan का वही problem है, they're not getting wickets. Their bowlers look dead in the middle overs. It just looks like कोई आके खाली खत्म करने को डालने को 50 ओवर डाल रहे खाली. तो वो इंटेंट अगर ला लिए कल पाकिस्तान कहीं से और कहीं ना कहीं से just take their catches, they can add a lot of pressure tomorrow. Pakistan, yeah, I think अब देखो कल चेन्नई में है, right? So your prediction? I just feel Pakistan might win or not. That I mean, for me, either win, no problem. Maybe a little bit because it'll be entertaining in the table for Pakistan to win. South Africa already कच्चा सबको मार दे रहे, तो मेरे हिसाब से कल शायद there is something special going to come. Super over हो जाए. हाँ, वो भी हो गया तो मजा आ जाएगा. But yeah, Babar Azam big innings has to come now or it's never. Yeah, and I think, look, like I said, on form, South Africa are the better team. They're playing amazing. I love watching them play, man. मेरे 3 favorite player world के वहीं खेल रहे हैं अभी currently. And Ben Stokes my favorite. I love him as well. But he's going bye. Yeah, he's going. तो ये तीनों पे है. But I think now is the time, like I said, from what I've seen with Pakistan over the years, and we've closely followed India and Pakistan in the last 3-4 years, live in the stadium, outside the stadium. We followed both these teams. And both have their ups and downs, but we know that the talent is there. And until they're out, we can't say that they're out. Yeah. Pakistan particularly, you can't ever say them, because we counted them out in T20 World Cup, and somewhere down the line Zimbabwe क्या हमारे पास Zimbabwe क्या किया है, वही Zimbabwe विन फाइनल में आया. So अब मेरे को ये बताओ, अगर पाकिस्तान पहुंच गई सेमीफाइनल, ठीक है, अब फिर सेमीफाइनल में जो भी होता वो तो होगा, राइट, होने वाला है, जो भी होने वाला है. अगर उन्हें सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचता, फिर आप बाबर की कप्तानी के साथ क्या करते? बाबर की कप्तानी से क्या देखो भाई, वो तो फाइनल. अब यहाँ से अगर उन्हें पहुंच गया सेमीफाइनल, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप कप्तानी के साथ? मेरे हिसाब से देखो, अगर बाबर सेमीफाइनल फाइनल पहुंचता, मेरे को नहीं लगता बाबर would want to also be captain after this whole dramatic. But bro, this happens every time. They lose to Zimbabwe, they lose this, they say उसको निकालो, फिर सब खामोश हो जाता है, because उन्हें फाइनल पहुंच जाता है, सेमीफाइनल पहुंच जाता है. मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे, आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो then you start making subtle changes from that time, even when you lose. So for example, जब आप एशिया कप फाइनल और वर्ल्ड कप हारे फाइनल, जब आप थोड़े सटल चेंजेस लाना था, जब आप इमाद वसीम को वापस लेके आ सकते थे, आप ये वर्ल्ड कप के लिए सरफराज को लेके आ सकते थे. सरफराज क्यों नहीं है बैकअप विकेट कीपर में, क्यों नहीं है, उसको हारिस को क्यों रखे? सरफराज का तो खैर there's a lot of issue, not just against, I don't know if it's Babar particularly, but also within the PCB people have issues against him, and उनका nature भी बहुत upfront है, he doesn't give a crap. A lot of people, like I think Hassan Ali and थोड़े लोग काफी respect करते हैं. That's why Amir and Imad Wasim are also not in the team, because they love Sarfaraz's captaincy and stuff like that. Imad Wasim तो मुंह पे बोल देता है कि भाई उन्हें ही better captain. मगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ठीक है, अब तो रहेगा. अब issue क्या है मालूम, after the World Cup भी चाहता हूँ, अगर नहीं जीते बाबर, हाँ नहीं जीते तो, बट अगर सेमीफाइनल फाइनल लेके गए तो फिर क्या कर सकते? तो फिर वो सिचुएशन में again it will be either, if Babar can level his head down and see the betterment of Pakistan cricket, that will be the best solution for them. But again, you will just have to wait and see, because these are unpredictable characters. And अभी आप जो मेरे को कल न्यूज़ दिए कि एक मैनेजर 5 लोगों का है, वो तो फिर तो मसला ही नहीं है, स्कूल का मसला है कि भाई मेरा फ्रेंड इन्हें हमला एक टीम है, तो वही मसला हो जाएगा. मगर अब देखो आप, जब मैं अब जो पैनलिस्ट बैठे हुए, राइट, पूरे, और यार ऑल दोस गाइस, ए स्पोर्ट्स पे इधर उधर सब बैठे हुए, राइट, सब यही बोल रहे हैं कप्तानी के ऊपर में बार करिए, जो इफी भाई और वासी भाई 3 साल से बोल रहे हैं, उन लोग अब बोल रहे हैं, राइट. मगर ये लोग जब अगर सेमीफाइनल फाइनल बोलते हैं, they were proud of the team, they reached it, and think they don't say at that time. That's when you have to take action if you want to take action. How can you, like, because now it's up to you. Are you okay with semifinals and finals, or you want to take that decision ki bhai, this is not good enough, we need championship, we need, that's how you have to look at it. See, if you look at India's thing, man, Virat Kohli is India's favorite player. But नहीं, मगर कोहली के साथ भी यही था, कोहली के साथ तो बट फिर भी जल्दी चेंज कर दिए. नहीं करे, देखो विराट कोहली reached semifinals, finals, he's lost those and everything. Then when he got knocked out of the group stages, then it happened. अब if Babar gets knocked out of the group stage, of course his captaincy will go. I can guarantee you that. लिख के. So I think either by the betterment of Pakistan cricket, he just knocked out in the group stages or something. No, but that's what I'm saying. Like for me, I'll tell Pakistan historically have been mercurial. Like they've been. It's not like if
you see on paper, man for man, I think India is a much India's better team, much better, right? yeah, Much better team. much But better, yeah. but the fact that Pakistan did well in the last two T20 World Cups, you have to give them some credit over there. You have to give them something. If I'm a Pakistani fan, I'm not really expecting trophies every single time, but I know that's not how they think. But if you see on paper, he's done an okay job. But then, of But course, like again, what do you have in your arsenal as a Pakistani cricket team? What you can get? And Yeah. I think probably much better team you could have made than what you made this time around. Like considering the like the workload management issues and stuff like that, you could have probably made a better team. Like add Imad Wasim, Shan Masood. Like there are a lot of players on the Pakistani bench right now where people are questioning. Like Ehsanullah hai, Dhani hai. But what I'm काफी telling बोला you ना. is, even with them, right? Imad Wasim खेला था 2019 World Cup, हाँ. right? वहाँ पे सरफराज कैप्टन था, ठीक है. उन्हें आई अंडरस्टैंड, आप ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाते थे. इफ न्यूजीलैंड इंडिया का रेन आउट नहीं होता, इंडिया जीत के न्यूजीलैंड के खिलाफ, देन इट वुड हैव बीन पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स. आई अंडरस्टैंड दैट. बट उसमें भी आप वेस्ट इंडीज से 100 ऑल आउट हुए. उसमें भी आप बिकॉज़ आप देखो 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया सरफराज, फिर उसको एक ही मौका दिए और ग्रुप वो स्टेज में मगर नॉकआउट वो हुआ. चैंपियनशिप में आपको, आई विल टेक यू बैक ओवर देयर, उसमें श्रीलंका का श्रीलंका गेम का, था, हाँ. नॉकआउट गेम था टू गो इनटू द सेमी. नॉट वाज अ नॉकआउट, इज अ ग्रुप स्टेज गेम, Do or बट die, हाँ, डू और डाई था. उसमें क्या हुआ था, सरफराज 2 बार छोड़े उसको किसी श्रीलंका वाले, एक स्क्वायर लेग पे, मेरे को बहुत साफ याद है एक गेम. एंड देन आई थिंक जो नॉन स्ट्राइकर था, आमिर था या कोई था, उसको भी ड्रॉप करे थे. एंड there was luck there involved. चलो, Okay, ठीक है, हाँ. and then okay, they smashed England. They think they won the trophy. But I'm saying, like, even then वो टूर्नामेंट में क्या हुआ, इंडिया से बहुत बुरा हारे थे, राइट? श्रीलंका से ऑलमोस्ट हार गए थे. They luckily qualified for the semifinals and then they killed it. 2019 they almost qualified, but the thing 2015 also they got smashed. Yeah, So that's I'm a saying, group, if you see their history, they shouldn't expect a lot of things. yeah, with I this team. understand that it's not how they look. Everyone will think I'm stupid right now, but I'm just saying. The problem with this Pakistan team is again the correlation between the captaincy and that thing with the management entry and exit. Again, a lot of like the government इन्होंने तो इन्होंने रहते उन्होंने रहते, तो ये टीम में कभी एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर स्कीम ऑफ थिंग्स कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, 2-3 साल टर्म नहीं रहता इनका. 6-6 महीने टर्म चेंज होते रहता किसका भी. आप देखो जका अशरफ है, फिर उन्हें मैं नहीं खेलता बोला, सरफी को हटा दिए, इन्हों हट गए, इंजमाम आ गए, इंजमाम अंजुम इफ्तिखार राव और मिसबाह आ गए, मिसबाह इन्ना चले गए, फिर बाबर आ गया, फिर जका अशरफ आ गए. तो अपने पास एटलीस्ट वो चेतन शर्मा इन्ना 2-2 साल ये टर्म अच्छी फ्लूइडिटी के साथ चलती रहती है. यहाँ पे क्या 6-6 महीने को गाड़ी बदलती रह रही, तो बंदे जो ट्रैवल करे वो गाड़ी में नहीं, वो बिल्कुल सही है. मैं आपके साथ गेम खेलता हूँ अभी, ठीक है? You know that game where you choose to, you have to knock out one option. Okay, now take World Cup form out of this, just on paper. आप पेपर में इमेजिन कर लो, ठीक है? The India team or Pakistan team on paper, who's better? You guys can play along with us in the comments. India, right? Okay, New Zealand, Pakistan on paper, who's better? Without Kane, Pakistan, I think. You think Pakistan is without better? Kane, Pakistan. No, with the full team. With like on Kane, paper, going into the World then Cup. New Zealand. You think like Trent Bolt, Matt Henry, Tom Latham. Okay, Australia, Pakistan, who's better? Australia, England or Pakistan on paper? England was smashing it, so I'd say on paper, right? Paper. So you've picked okay, and now South Africa or Pakistan on paper? Pakistan, because South Africa was not that clicking. You think South Africa? Okay, Pakistan. Okay, Pakistan. But you think South Africa, Pakistan is better than South Africa. Yeah. So let's say you pick New Zealand. 4 out of 5. You pick 4 out of 5 is better than Pakistan on paper. Yeah. So you put Pakistan in 5th position. Yeah. Right now they're there only. So that's what I'm saying. Like, what do we expect? Like, if you're a fan of Pakistan, then what do you expect? Like, you do expect them to be number 1. See, with Pakistan, I think the fans are frustrated with the fact that they see the potential, but they're not able to get to any significant spot cleanly. जब हमेशा ये जो लास्ट मिनट दिमाग खराब करके जो आते हैं ना या नहीं आते हैं ना, they know that their team is much more put. And see, if I would say you bring in Naseem in this team with the workload management you did, Naseem को ला लो आप, जो players in form है, without and they want to see a very free politically, no problems, everybody's friends. हाँ, आप शाहीन को तो खिलाएंगे आप, अगर नसीम होता तो it would have been better. Probably get in like they want to see a full team without all of these politics basically. That's why they're frustrated as fans के भाई, because India में आप देख लो संजू नहीं है, नहीं हम लोग को फिर भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को मालूम है this is the best team India can get. But with Pakistan, they know there's a better team in Pakistan's ranks that they're not able to get because of whatever politics is going on. You would not bring South Shakil from the test 2 months, 3 months before the World Cup. You would never do that before the Asia Cup. 2 months before South Shakil को ला रहे आप. Who was playing at that position back then for the ODI squad? You had, I think, Imad Wasim was playing with them. Then you एकदम इमामुल हक आ गए, इमामुल हक की जगह फिर so they Pakistan का problem यही है, the fans are irritated that they're not able to get the best Pakistani squad out because of all of these politics that's going on in their
background. Yeah, नहीं मेरे लिए देखो, I think on paper New Zealand is a better team than Pakistan because I think New Zealand, if you look at their team, Openers, you know, look at the Conway, fast bowlers, spinners, batters, they have everything. They have a hitter also in that guy Chapman. They have everybody, right? I think Australia has a much better team on paper. I think India has a much better team. I think England is a better team. I think South Africa has a much better team also, and I'm including Nokia in it as well. And I think South Africa is a better team going into the World Cup. I'm saying if everybody is fit, even Nasim is fit, I think they're better teams. तो अगर मैं expect करूँ, अगर मैं top 4 में आया, अब मैं तो हम लोग रखते हैं पाकिस्तान को ये वो because Asian team है and everything like that, but if I see it on paper I think these teams are better than Pakistan. 100%. So if they make it to the semi-finals, they're punching above their weight. They're punching above their weight. That's the thing. Considering that the people that they have sitting outside, the match winners, like I don't know who, I can't name them, like a lot of people from the PSL, you could have got a lot of people. And I agree with you. You have people that from the fans perspective, I would have been pissed off कि भाई अरे ये बंदा फॉर्म में इसको लो यार, आप इसको 3 महीने के बाद आप उसको लिए भी नहीं तो आप खिलाना था। देखो साइम अयूब को अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाना था। आप 3 जो मैचेस थे इन श्रीलंका, आप वहां पे कहीं को नहीं खिलाए, जैसे इंडिया तिलक वर्मा को खिलाए, राइट? वहां पे आप कहीं को नहीं चांस मारे उसका। एशिया कप में ले लेते यार, एशिया कप में ले लेते, जस्ट ट्राई हिम, इफ इट डजंट वर्क नो प्रॉब्लम। मगर आप तैयार रखते प्लेयर्स को, आप जमान खान को खाली एक मैच खिलाया उसको बिठा दिया, आप नसीम को नेपाल के खिलाफ नेपाल के खिलाफ कहीं को खिलाए, आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं ट्राई करे? यू नो इंडिया जो क्या बोलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर कुछ होता ये बॉलर्स को, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाता, या यू नो अर्शदीप खेल चुका है, दूसरे भी कौन है बॉलर्स इंडिया के, दीपक चाहरी, वो दे ऑल प्लेड इन द शिवम मावी भी उन्हें लेफ्ट हैंडर को था, छोटू जो खेला उन्हें भी खेला शुरू के साल में, इवन शिवम मावी प्लेड द राइट हैंड जो ऊपर देख के, तो दे ऑल हैव प्लेड राइट। तो आप ये पूरा साल खाली 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? और वो भी पूरे फॉर्मेट। सूर्या का भी केस ले लो ना, सूर्या भी पूरे साल खेला बोल के ही गॉट अ चांस नाउ। तैयार रखे उसको, हम लोग बोलते थे सूर्या को क्यों ले रहे, वो नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट प्लेयर को तैयार रख रहे हैं आप, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पे आप खाली 11 खिला रहे हैं, दैट्स व्हाई वही 11 खेल रहे हैं। आपको लग रहा है ये कि ये 11 खेलेंगे, इसलिए मैं सवाल उठाया, आप समझ रहे कि जीतेंगे वर्ल्ड कप? नहीं होता भाई ऐसा। वर्ल्ड कप की 15 की स्क्वाड इसलिए होती है ताकि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो विद इन द कप, बट मेंटालिटी कोर रखे सकते हैं प्लेयरों की। सूर्या थ्रू द ईयर इन प्ले, ही नोज व्हाट टीम इंडिया इज लुकिंग आउट फॉर। यू कांट गेट साउथ शकील 3 months before and expect him to play a world cup with the mentality that Pakistan has been playing for 2 years. You can't do that. हार्दिक पांड्या का क्या अपडेट है? हार्दिक पांड्या का तो आज टेस्ट हुए होंगे भाई के, तो अपने को रिटर्न डेट प्रोबेबली कल तक मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इट इज, when will he be? I realistically think I don't think I will see him till at least श्रीलंका के मैच में, तो he will not be there. इंग्लैंड का तो कंफर्म है, but I'm thinking कि the way this injury is, it's ligament injury, जल्दी हील नहीं होता ये चीज, तो मेरे को तो श्रीलंका के एंड तक probably आप you might expect him directly semi-final entry maybe. And is that a big risk? I think that would be a big risk, high pressure match. If it backfires, फिर हो गई, recur हो गया, we know this guy is potentially like that, and he goes to overcompensate just for the sake of the blue jersey, you might end up losing him for good. You know, Sri Lanka, Shanaka, like for like replacement. 36-year-old. We don't have like anything, bro. We have no like for like, bro. If Hardik goes, who you see as his replacement? Shivam Dube, Venkatesh Iyer. These are like for like. आप like मैं क्या बोलूँ, like you know, you have to look at a medium pace all rounder. Like how can I tell you Sanju Samson? How can I tell you Akshar Patel? They will bring Akshar Patel only, I think. If he goes, or they'll bring like Tilak Verma, right? But like for like तो नहीं है, और कौन है? रजत भाटिया। रजत भाटिया बोले हमने तो आरसीबी में नहीं खेला। मतलब मीडियम पेस ऑलराउंडर कौन है? शिवम उन्हें क्या अपना मुरली विजय ने यार, विजय शंकर। हाँ, तो फिर कौन वो तो हार्दिक ला ले सकता, गुजरात रूट। तो यही है आपकी, कौन है लाइक फॉर लाइक? मगर दैट्स हु आई थिंक। मुंबई में कोई है तो उन्हें आ जाएगा। मुंबई में कौन है मीडियम पेस ऑलराउंडर? सोचो। अरे था यार वो, उसका नाम भूल गया मैं, बट यही तो है प्रॉब्लम, लाइक यू डोंट हैव लाइक मीडियम पेस ऑलराउंडर। सो तिलक वर्मा विल प्ले और दिस गाय विल कम, संजू सैमसन, और द अदर गाय अक्षर पटेल विल कम। लेकिन मेरे को लग रहा है आप इंजरी के बाद उसको लेके आए, डोंट एंड अप इंजरिंग हिम फॉर गुड, बिकॉज़ ही इज ओनली मीडियम ऑलराउंडर। So I don't know what India is going to do with that, but अभी तो कल तक शायद या परसों तक मालूम होगा हार्दिक पांड्या का अपडेट क्या है। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो उनको ऑलरेडी टाटा बोल दिया, and I think श्रीलंका का भी मैच नहीं खेलेंगे, because India, if they beat England, potentially they have nothing to play for against Sri Lanka, so I think they'll rest. What about the first place position? First place position, I think right now India is 5-5, they'll be 6-6. I think nobody can touch them. Would you like to see a playoff format, or you like the semi-final format in this World Cup? Because यहाँ पे 1 versus 4 है, 2 versus 3 straight knockout.
So if you win all the matches, doesn't count for crap. Like in the semi-finals, you lose, you lose. Yeah. So you like the playoff where अगर top of the table आए तो आपको 2 shot मिलते हैं. I like this more because it puts more pressure on the match, like from Yeah, a me competition too. level. So I like it that way. वो एक और चांस मिल गया, वो first try बोल के आपको वो रहता, ये already one-sided matches है यार, तो I think it'll be much more exciting कि भाई on that day whoever plays well goes into the final rather than giving another opportunity like that. कैमरन ग्रीन था मुंबई में, उसको नहीं ले सकते. हाँ, तो आपको यही प्रॉब्लम है भाई, आपके पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही नहीं है. जो है उन लोग को तो चांस नहीं मिलेगा. मेरे हिसाब से लाइक उन लोग को खिला देना पड़ता, लाइक इन बायलैटरल्स एंड स्टफ. हार्दिक पांड्या, हाउ लॉन्ग मोर इज गोना लास्ट? उसको टी20 कैप्टन What is it, 29, 30? 31? Yeah, he just turned 30, Yeah, like so a few weeks ago. Yeah, so probably if he's injury free. Bro, he is the T20 World Cup captain. Now tell me, if he's not fit, then what happens? Then Rohit Sharma walks back in. That is the thing. So, like, I think you have to start. You have to have replacements. Unless they make Shubman Gill the captain, I don't know. Yeah, but his role is so important. Nobody, He yeah. makes the whole balance of the team. Thing like even if he's not captain or this or that, उसको रहना जरूरी रहता because अपने टीम से ही खिला सकते. Do you see after winning the 6th game, India will, yeah, I think India will rest a few players. They should, yeah. They should, because West Indies में आप देखो, they did rest a few players because they didn't need to play there, and I think they'll do the same thing here. Even धर्मशाला में 2 दिन हालांकि break मिला, I think it'll be better अगर they rest just before a bigger match in the semi-final. They'll look much more refreshed. Yeah. And ready. And ईशान किशन को chance दे देंगे. Deservedly बेचारा बैठा हुआ है bench पे, तो I think ईशान किशन will get a chance to move in, and Shami will get a chance to play again. Siraj तो खेल ही रहा. I think Siraj also needs a break. So yeah, I mean they've got a good break, but Kuldeep also you might see him not play, and they'll probably play Ashwin over there. Yeah. Gill for future captain. Yeah, 100%. Like he is the only potential candidate right now. I completely disagree. Completely. What do you think? Siraj को बनाएंगे, बुमराह को बनाएंगे? नहीं, मैं आपको रीजनिंग भी देता हूँ. श्रेयस अय्यर को बनाओ अगर उन्हें फिट है. उन्हें फिट है. या केएल राहुल को बनाओ, या ऋषभ पंत को बनाओ. पंत, हाँ, मतलब अभी तो केएल राहुल ही होगा. आप या न तो ऋषभ पंत को बनाओ, आप ईशान किशन को बनाओ, मगर गिल को ना को बनाओ. मैं बोलता हूँ आपको क्यों. Because I think Shubman Gill is going to be India's best batter in the next few years, and I don't think, like we've seen it with Virat Kohli, we've seen Babar Azam and everything. Let them focus on the batting, make another guy your captain, and let this guy score runs and runs and runs. I know he can still do it as captain, but I don't know, like unless he's tested and everything. From what I've seen, I can be completely wrong, but I would not make Shubman Gill captain. Right now he's too young, and he looks very soft right now as well. Like if you compare it to the other guys, I would rather have him as your main batter, play all the because time, you like Sachin, make somebody like Ganguly captain, doesn't matter. Whoever is fit, उसको captain बना दो. केएल राहुल का भी देख लो आप, like उसको कैप्टनसी दे, उन्हें प्रेशर हैंडल नहीं करा. बांग्लादेश में काफी फेल हुआ miserably with the bat. But I think मेरे हिसाब से अगर कैप्टन कोई बन सकता है, then apart from Shubman Gill is केएल राहुल. और श्रेयस अय्यर का ये टॉस को गए जब तक पीठ पकड़ ली तो नहीं बोल सकते. हाँ, उन्हें कैप्टन टैक्टिक्स उसके अच्छे हैं. श्रेयस अय्यर को बना देना कैप्टन. हाँ, वो तो फिर क्रेजी रहेगा. कुलदीप भाई को कैप्टन बना. But I think it should be one of those guys. कहीं ना कहीं से अश्विन आएगा. ऋषभ पंत को भी बना सकते हैं, ईशान किशन को भी बना सकते हैं आप. ईशान किशन को बना सकते हैं, बट उसकी स्पॉट बनना ना मुंबई का. ईशान किशन was the captain of ऋषभ पंत in Mumbai. No. रांची. No. यूपी में नहीं. No. 119. ईशान किशन was the captain जो वेस्ट इंडीज से हारे थे 2016 में. जब बेस्ट बैटर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर, if you all after what best batter, best all-rounder, best bowler for you, for all of you, for you all after half league games done. So who is the best batter in this tournament for you? Rohit Sharma. Rohit Sharma. Without a doubt, Quinton de Kock. Acha, 300. Quinton de Kock. And then second, Henrik Larsson, and third, Rohit Sharma. But yeah, that's my opinion. Quinton de Kock. मैं South Africa का green भूल जाते रहता. By Klaasen. I have only one green in my head right now. If you want me to be biased, I'll say Henrik Larsson is the best batter in this tournament. Yeah, that's not being biased actually. Bias should be using Rohit Sharma. But Virat Kohli also been spectacular. Virat Kohli also, but Quinton de Kock, because he's coming off age, and this is his last tournament before he retires. Rohit Sharma also age. Huh? Rohit Sharma also coming off age.
If you tell me most, like, I mean, like Rohit Sharma has been amazing, but just my opinion there, it's not like आप भी सही है, मैं हाँ भी नहीं सही, बिल्कुल. most So of मेरे लिए रोहित शर्मा मुस्तफा के लिए it's either one of the South Africans, Quinton or Klaasen. Yeah, I'll go with Quinton de Kock. He's been outstanding. And remember, I told you he'll be the leading run scorer in this World भाई Cup. Sitting on this couch, you सुदीप remember? बाबा बोल. मैं ऐसा लेटा हुआ था. हाँ क्या कि बोल. आप वहां लेटे हुए थे, वहां हाँ पे हमारे हाँ दोस्त हाँ थे. मनोज भाई. मैं क्या बोला था? Quinton de Kock going to Be the leading be the run leading scorer. run scorer and then in said this- how is it possible, it can't happen. Quinton de Kock, bro. सुदीप भाई बोल रहे हैं ऋतुराज को कैप्टन बना दो. एक्चुअली ऋतुराज को बना सकते हो ना, एशियन गेम्स लीड कर. आप बना सकते हैं. चाहल को बना दो. चाहल तो खेल जगह खेल ना, बैटिंग सीखो बोलो चाहल को पहले. हाँ, बेस्ट ऑलराउंडर. बेस्ट ऑलराउंडर मार्को यान्सन. मार्को यान्सन has been good. कौन है और श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कोई पकड़ेंगे. कोई है अफगानिस्तान ना, राशिद खान is not been batting that great. Marco Yeah, Jansen. Marco Jansen probably. Yeah, Marco Jansen. Best bowler. Ooh, best bowler. Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah. Economical. He's been crazy Economical. in this tournament. कुलदीप यादव बोल सकते हैं, विकेट्स ले रहे हैं हर मैच में. He's been amazing as well, yeah. As well. And Zampa's catching fire now. He's bowling really well. मेरे लिए it's one of those guys, man. Ahmed one match खेला वरना would. Yeah, उन्हें भी crazy लगा Noor Ahmed. One of those guys, bro. Bolt and Henry, they've been outstanding. Yeah, Henry has been spectacular. But Henry probably, Henry's been really, really good. I say Bumrah because Bumrah. I also advise you guys, Cricinfo पे Cricket Monthly बोल के आता है, you can see there's an article about interview with Sadi and Bolt. It's a audio interview, so they wrote the whole transcript. It's a really good interview, and bro, like they're like the new Jimmy Anderson and Stuart Broad. They've been playing together since the under 15s, under 16s, and Sadi and who? Sadi and who? Bolt. Right now, Sadi is carrying drinks. He's in the bench. Yeah, he has a slight injury too. He got injured. But Matt Henry, right now, you can't replace him. Ferguson has the pace. But Sadi and Bolt, bro, they've only played against each other in 4 games. That's in the IPL. Otherwise, they're always together, and it's about their bonding. One bowls in swing, one bowls out swing. It's a really good article. What about your boy Darren Mitchell? He's also been decent. He scored 100, right? Against India. Against India, right? Yeah, he's been really good with that. I think, Klaasen, Quinton de Kock, Rohit Sharma, Virat Kohli, they're ahead right now in the points table. Virat Kohli has been outstanding as well. He's been really good under pressure against Australia, Zabardast tha, and then his 100 against was it Bangladesh? And then his 95 against New Zealand under pressure. So Virat Kohli is right up there also. मगर मैं like South Africa, especially Klaasen जो खेल रहा नहीं. Because you didn't expect also from Klaasen has always been throughout the year. He's been good. Always expect. But like with Rohit Sharma, Virat Kohli, it's conditions. No, but conditions are challenging for South Africa. With Virat Kohli and Rohit Sharma, we've seen it, right? With Quinton and Klaasen, on the world stage, like nobody expected them. Like we've been watching them, so we're like, yeah, in exactly. वही अनएक्सपेक्टेडनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं. But yeah, I think best fielding team. Best fielding team has been, I can't say, New Zealand without a doubt. Without a doubt. There is no debating that. New Zealand has been good. They've been outstanding, man. कैसा फील्डिंग करे इंडिया के खिलाफ अभी ऑस्ट्रेलिया अच्छी करी लास्ट मैच में. हाँ, मगर उन लोग शुरू में बहुत बेकार थे. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एवरीथिंग. न्यूजीलैंड देयर आउटस्टैंडिंग टीम. इंडिया फील्डिंग, कम ऑन. जड्डू क्या चांस छोड़ रहा हूं. मेडल ले रहे तो क्या आरती दे देंगे क्या? मेडल स्पाइडर कैंप पे आ गया. इंडिया हैज बीन प्रोबब्ली लाइक इन द टॉप 3 but good. Yeah, but like again इंडिया को वनडे कच्चा मार रहे पूरा. So yeah, but फील्डिंग न्यूजीलैंड की बेस्ट है यार. बहुत बेहतरीन फील्डिंग है. उन्हें परसों जो रोका शॉट, नेदरलैंड्स की भी फील्डिंग अच्छी थी. हां, नेदरलैंड्स की भी अच्छी है. वैंडरमर्फ का लाइक उन्हें रिवर्स कप इतना लो भी कैच कर रहा है. एक नहीं दिए, एक दिए उन लोग तो. या हिस्टिंग सम रिस्क, बट या न्यूजीलैंड हैज बीन द बेस्ट फील्डिंग टीम सो फार. बट या कल का मैच है इंपॉर्टेंट. साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान. इट्स गोना बी फन टू, I won't say giants at this time, but South Africa is much more giant than Pakistan right now. But it's Pakistan's last day to study for an exam, and let's see if they study last minute crunching. कुछ ना कुछ निकाले बाबर कहीं ना कहीं से. मिट्टी में से सोना निकालने का टाइम आ गया कप्तान साहब को. इंडिया आर इन लखनऊ नाउ. देव रीच्ड. स्पाइस जेट का फोटो डाले विराट कोहली, तो उससे हमें मालूम होगा कि लखनऊ पहुंच गए. बाय बाय इंग्लैंड. आई थिंक बेहतरीन वो मिलती कबाब्स लखनऊ में. बाय बाय इंग्लैंड. Yeah, they're done, bro. England's done. Put a fork in them, like Mustafa said, stick a fork in them. They're done. And potentially tomorrow is Pakistan going to be done. Tadka dal dena ya nahi? England have a 4% chance to come back. मतलब
they have, it's like बेस्ट फील्डिंग टीम नेदरलैंड बोल रहे सुदीप they've been really good. वो भी मैं agree हाँ करता हूँ. Like उन लोग भी बहुत अच्छा, नेदरलैंड्स भी बहुत अच्छी फील्डिंग कर चुके हैं. They've done really good fielding. England is done, bro. Like 4% chance है, मगर वो like नहीं होता मेरे हिसाब से. everyone has to lose and everybody has to here they have to win all of them. There's going to be a situation where like they're going to get screwed. But they're going to knock someone out, I feel like. They're probably Pakistan. Yeah, that's what happens, right? In general, जब आप bottom of the table रहते हैं, then towards the end they'll have a say. And then those teams who are trying to qualify, they don't want to play like these kind of teams. Bangladesh and England, they probably upset someone. Maybe Australia. From Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and Afghanistan and Australia, ये 5 टीम है, right? Yes, sir. नहीं, मैं 4 एशियन टीम्स लूंगा. उसमें से आपके हिसाब से कौन आएंगे सेमीफाइनल में? मेरे को तो श्रीलंका जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के जगह में आ सकते हैं. अगर इंडिया को हरा दिया श्रीलंका एंड तुम बैगन भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो. देखा तो मैं हो गया बात दिखा तो मैंने उसकी क्लिपिंग निकाल नहीं, पर जो बांग्लादेश भी बोले, ये बांग्लादेश तो अपने ऐसे ही बोलते यार, लाइक some team that you're expecting to upset. Now if Bangladesh come in the semi-final, you show me a clip of you saying, yeah, I told you Bangladesh will be in the I won't say that. Now today's recording, I'm saying I said Sri Lanka, I said New Zealand, I said India, and I said Pakistan. इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान. ये पिंडा तुम वर्ल्ड कप से पहले बोले. अभी शब्द अपन लाइव कर रहे थे प्रीव्यू वर्ल्ड कप का. But like when in before the World Cup started. मनोज भाई के साथ. You said Sri Lanka will make it to the semi-finals. Yes, I said it. Because I said ICC के tournament and Pakistan you said. I think I said Pakistan. I said England. I have to check. Yeah, and you said India. Yeah. You didn't say New Zealand. You didn't say South Africa. I didn't say South Africa. Yeah. South Africa तो no way. Munawwar explaining Dragon and yeah, I saw that, man. Big Boss देखने को टाइम नहीं मिल रहा, पंटर कहाँ से मिल रहा आपको टाइम? Give us some time, bro. But नहीं, I think यही कि भाई श्रीलंका का रीजनिंग इसलिए बोलूँगा मैं, ICC टूर्नामेंट्स में 2011 में they've always somehow managed to come up the ranks and they just out of nowhere they come in and Angelo Matthews की introduction आज हो गई, taking out England with him. Best prediction. Thank you so much, Sudeep Bhai. I think he's singing to something else. I'm pretty sure for Mustafa's thing. But yeah, tomorrow we can't wait. What's going to happen? It's going to be a fun game. Today's game again, acha hua. It finished like at 8 o'clock. The match started at probably the fastest 50-over match I've seen in a long time. And England, just been a very upsetting performance. And yeah, I think कल मिलते हैं. देखते हैं बाबर भाई क्या कर सकते हैं, मुस्तफा भाई के क्विंटन भाई क्या करेंगे, उनके क्लासन भाई क्या करेंगे, उनके यानसन भाई क्या करेंगे, उनके मार्करम भाई क्या करेंगे. So yeah, Sudeep bhai says Australia might qualify. Yeah, it's like again, it's Australia look like the more likelier one. Do you see any upset now? I think like tomorrow you might see Pakistan upset South Africa. I might see England and Bangladesh upset someone. Like that's most probably Pakistan. I feel. Australia players थोड़ा प्यार में आ रहे हैं. Yeah, I think थोड़ा अच्छा रिदम में आ रहे हैं. थोड़े बहुत उन लोग अंडरस्टैंडिंग, लाइक ग्लेन मैक्सवेल की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वार्नर की वापसी काफी इंपॉर्टेंट रही, स्टीव स्मिथ 71 मारे. तो जैसे मुस्तफा भाई बोले, ऐसे मैचेस में आप रन्स लेते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छा ग्रो होता. तो यस, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जो ऑब्वियसली 2 मैचेस के बाद काफी लोग शॉक हो गए थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया. नाउ यू सी दैट ऑस्ट्रेलिया कमिंग बैक इन देयर रिदम एंड जैसा बोल रहा, 1-2 मैचेस हार के आप थोड़ा समझते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वही आप ऑस्ट्रेलिया के साथ देख सकते हैं. कल जुड़े हमारे साथ for Pakistan versus South Africa. I am going to say maybe Pakistan's winning. Mustafa is going to say South Africa is going to win. At the end of the day, it's just another game for us. But let's see, it should be fun. Yes. तो like करिए, subscribe करिए and chase the target करते रहिए.